All right, hello everyone, and welcome to DigiTales episode 5 of our second season. My name is Faizan Sayyed और आज मेरे साथ एक बहुत important शख्सियत हैं पाकिस्तान की लीगल एरिना के अंदर ऐसी शख्सियत हैं जो सब जानते हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं दो दफ़ा दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दौरान सिंध के अंदर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं सिंध के अंदर और what's most interesting he was also a prisoner of war in the 1971 war. अनवर मंसूर साहब आप कैसे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फैजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं 1971 वॉर के अंदर आप आर्मी में थे और आप उस वॉर के अंदर एक प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे थे। ये एक्सपीरियंस आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल था? हाउ डिड इट अफेक्ट योर फ्यूचर करियर चॉइसेस और लाइफ डिसीजंस? बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली माय एंटायर लाइफ चेंज्ड आफ्टर दिस इशू। पहले इससे कि मैं आगे चलूँ इसको, बट आई नीड टू टेल यू दैट my entry into the army was my decision, though opposed by my family. Or this was a family of lawyers, na? We are a family of multiple lawyers and others also. But basically, my father was a lawyer, my grandfather was a lawyer. Two of them in the family were lawyers. But when I joined the army, it was an opposition that was against me. But fortunately, I did get permission to join, and I did in 1969. I passed out in 71 and was sent straight to the warring area, that is East Pakistan as it was then. Fought the war at the very young age. How old were you? I was only 20 years old. 20, wow, young. And my first ever posting, never had an experience of war nor any practical training of war. But yes, training in the military academy was one which was very important, and probably that is the strength that one gains once you are trained in the military. The mental strength, the resistance, the strength that you move in without fear. All that comes up in the military training that you have at the military academy. Now, and how long were you in training before you went to war? 2 years. 2 years की ट्रेनिंग थी, and then अच्छा ठीक है, so you had a full 2 years rigorous training, लेकिन war तो फिर भी एक unexpected चीज होती है। जी। Now उसमें हुआ ये कि वहाँ पर जैसे सब जानते हैं कि we unfortunately surrendered, and that surrender happened right in front of my eyes when our div commander handed over his pistol to the other general of the Indian Army, which naturally had a very major impact on my mind as a young officer with views of fighting the enemy, etc., as it is taught in the military academy. It must be a big conflict in the mind. Yes, it was. अब उसके बाद फिर 2 साल कैद में रहे, which was in Allahabad. 2 साल आप कैद में रहे as a prisoner of war. As a prisoner of war, which was कहाँ पे रखा था आपको? Allahabad. But when I came back, I was not in a frame of mind कि हम continue कर सकते हैं, because बहुत shatter हो जाता आदमी, especially surrender के बाद, not because of the captivity में तो probably one reads, कुछ करता रहता है, कोई है। Conditions ठीक थे captivity के? जी? Conditions captivity के मुनासिब थे? देखिए, मैं I've never complained of that. मुनासिब तो कोई भी नहीं होता। अगर हमारे पास भी इंडियंस होते तो हम भी शायद उसी तरह की कंडीशंस में रखते।
complaining is not the right attitude. Attitude is that you get the best out of whatever you had. ठीक है. तो वो तो सही है जो ठीक है, it was not easy, मगर ये है कि हाँ, we did what was best for us, kept ourselves busy. बहरहाल once we came back, मैंने आते ही resign कर दिया, और it took about a year before the resignation was accepted. And when I left, we came back in 71 to 73. Mm-hmm. And in 74 October, I was released. And thereafter, because warring uske andar, we had passed out without completing our academics. Therefore, I had to go through the entire academic process again. ठीक है. Yeah, the whole process, that is going through BA and then LLB. And simultaneously, when I was doing my LLB, I was working also as an income tax practitioner. And that was since 77, yeah. 77 से मैं काम कर रहा था एज इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, बहुत रेगुलरली किया है. मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया. आपको याद होगा उस ज़माने में बड़े राइट्स हुए थे, स्टूडेंट राइट्स वगैरह. 77, 78, 79 में काफ़ी राइट्स हुए थे. उसमें हमें 1 साल 1.5 साल डिले भी हुआ. I passed out I graduated from the law college in 1980, and then I started my usual law practice. तो ये बताएं, coming back to the experience as a prisoner of war, कभी ऐसा लगा कि अनसर्टन था कि पता नहीं आगे हमें छोड़ेंगे, क्या होगा? उस 2 साल के पीरियड में अनसर्टनिटी कितनी थी, और उस अनसर्टनिटी को आप कैसे काउंटर करते थे? हाउ डिड यू कंट्रोल योर माइंड? देखिए, दैट वाज वेरी सिंपल, बिकॉज अनसर्टनिटी उस वक्त होती है जबकि इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं. यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन बड़ा क्लियर था कि वी आर प्रिजनर ऑफ वॉर. प्रिजनर ऑफ वॉर के अंदर सर्टन फैसिलिटीज थी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कुछ, वो भी मौजूद था. और हमें पता था आज नहीं तो कल वी हैव टू गो बैक. बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वी डिड वाज फैबुलस इन द सेंस दैट एक तो कुछ किताबें मिल गई थी. फॉर्चुनेटली वी रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. कुरान शरीफ वहाँ पर हमने बाकायदा मानी के साथ और तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ा. और उसके बाद एक बहुत अच्छा हमारे पास एक वो था कि हमारे साथ प्रिजनर ऑफ वॉर एक बहुत फेमस, वेरी वेरी फेमस क्रिकेटर कर्नल शुजाउद्दीन भट्ट होते थे. अगर आपको याद हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, होते थे पाकिस्तान. नाउ ही वाज विद अस इन द प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप. और अच्छा, हाँ, एमसीसी वालों ने उसको, दे न्यू कि ही इज देयर, तो दे सेंट हिम अ किट, ए कंप्लीट किट ऑफ क्रिकेट. अच्छा. हाँ, so we played a lot of cricket there. और टाइम पास ऐसे ही किया ग्रेजुअली. अच्छा. तो शायद ये भी पता हो कि we tried to escape also. अच्छा, there was an escape attempt. तो कितने लोग थे इसमें शामिल? There were about 21 of us जो उसमें थे. और it was led by then Major Shujat Ali Khan, who retired as a general. General Shujat Ali Khan, and there were many others, but unfortunately we could not go through, because despite the fact that we had completed a 102 feet long tunnel. Wow. How long did it take to build that tunnel? It took a while, but I was responsible for electrifying and for air, etc. So I used to go into the tunnel also. Electrification जो वो बड़ी क्रूशल थी, बिकॉज वहाँ पता चल जाएगा बिजली कहाँ से ले रहे हैं, क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा. बट वी मैनेज दैट ऑल्सो. बहरहाल वो पकड़े गए. व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड नेचुरली. वो मारपीट थोड़ी हुई और भी प्रॉब्लम्स हुई.
But then, but it was enjoyable in the sense that we had a wonderful set of army officers there. हमारे साथ Right. कुछ शिप के जो सिविल मर्चेंट शिप के जो सिविलियंस थे कुछ वो भी मौजूद थे. सो बहरहाल वो भी वहां पर थे. बट तो वो जो दोस्तियां बनी होंगी उस दौर में, वो दोस्तियां तो दे ट्रांसेंड टाइम, आई एम अस्यूमिंग. जी, आज भी आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन देयर. The famous Parvez Mehdi, who became eventually the chief of air staff, he was with us. The famous Flight Lieutenant Khalil, who eventually left the Air Force and became the Chief Collector Customs, he was there. Jan Shujat was there, and many others. Sayyid Jang Sahab hote the, Major Den Kanchima. There are numerous people who were there, and I recall our sittings there for hours and hours together, discussing everything under the sun. And well, we needed to pass time when we did. Right. What an experience. Matlab, prisoner of war, an escape attempt, matlab, learning how to pass the time in circumstances like these. अब मुझे बताएं कि when you, let's say, fast forward after 30 years of practicing law, you became Attorney General for the first time in the People's Party government. Then another, let's say, about almost 8 years later, you became Attorney General for the second time. You're only one of 3 people to have been Attorney General more than, to be Attorney General twice. And I think there's only one person who's been Attorney General 4 times. So you are one of the few people who has done this job more than once. How did this prisoner of war experience prepare you for that role? Because you were stuck in some interesting controversies during both times. Let me tell you one thing, that mental strength is a very, very important aspect. First, the mental strength developed in the military academy. Then, whilst you are there in the worst of situations, you develop a lot of, either you break down, you develop a very strong sense whereby you can fight whatever comes your way. मैं सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही नहीं, when I became the judge of the High Court, Sindh High Court, that time also it was that mental strength that allowed me to continue for that period, though I resigned early and left the judiciary very early in 2000. In 2000, I left the judiciary. Why did you leave the judiciary? You had a very small stint. 1 साल I think किया था आपने High Court judge. मैंने resign कर दिया था. Though my name had gone for confirmation, but I resigned for multiple personal reasons. There was nothing that otherwise prompted me to leave. But then, seeing my stint in the judiciary, the Sindh government insisted that I come up as an Advocate General. And this was the period of Arbab Rahim, if you recall. Mid 2000s. Yes. They insisted that I come and join this place, which I did. And I continued for almost 6 years as Advocate General Sindh, which again built my strength dealing with the government officers, the bureaucracy, जो केसेस होते हैं किस तरह से उनको चलाया जाता है. बिल्कुल. I think that helped me a lot. And it is after that I was offered the post of the Attorney Generalship. So I had a lot of experience behind me. So almost 6 years as Advocate General, which is almost a similar thing, but in a province. And and I had seen the judicial side also. So I knew what the judicial side is. I knew what the bureaucracy is. When I came in for the first time as Attorney General, naturally all that did help me a lot with the mental strength that I had developed during the years.
इसमें I'll come back to the Attorney General की आपकी वेबसाइट पे जो of पाकिस्तान AGP पाकिस्तान की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि the Attorney General serves as a bridge between the three pillars of state, executive, legislature and judiciary. इसका क्या मतलब है? अटॉर्नी जनरल का जो रोल है वो एग्जैक्टली क्या रोल है अगर वो कहते हैं कि ब्रिज है? अटॉर्नी जनरल का रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल. The Attorney General is an officer of the court, one. Number two, the Attorney General advises the government. And three, the Attorney General takes on a charge which he is assigned by the government. These are the three different independent roles that the Attorney General looks at. So basically, in very simple terms, if I say that the Attorney General is the government's top lawyer, is that the right way to look at it? Yes, he is the lawyer of the government, and that is why they use the word advise the government. So basically, this is a constitutional position. He is not supposed to be subordinate to anyone. No, unfortunately, in Pakistan, it has been framed in a manner that he comes under the law department, which is an incorrect thing because it is contrary to the constitution. Anywhere in the world, the Attorney General acts independent of the law department. And who does the Attorney General role report to according to the Constitution? The Constitution categorically says that this is a constitutional position, and therefore the Attorney General, he or she, whoever reports, should be reporting to the Prime Minister directly. But here what they have done is they have made rules of business whereby he's supposed to report to the law minister, which is, according to me, an incorrect assertion, where the status of the Attorney General is that of a federal minister, and he is reporting to another federal minister, which is wrong. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में क्लियर है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस जिसके बेसिस पे आई थिंक पूरी गवर्नमेंट चलती है उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आती है. इस कंफ्यूजन को दूर करने में कितना टाइम लगता है? मतलब ये बड़ा एक सिंपल सा एक हायरार्की है. कॉर्पोरेशंस के अंदर तो एक डिसीजन से हायरार्की सेट हो जाती है, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों इस हायरार्की को सेट करना? मैं इतना बता दूं कि 2010 में जब मैं पहले बना था, so I moved a summary saying that Attorney General should be an independent position. This was followed up by the subsequent Attorney Generals that came in, Mr. Salman, Mr. Ashtar, all of them followed this up. Then I came back in. I followed it up for the number of years that I was there, और आज तक नहीं हुआ है. क्या वजह होगी इसकी? Politics, nothing else. लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक एडवाइजर का रोल है, मतलब एक लॉयर का रोल है, काउंसिल का रोल है अटॉर्नी जनरल का, टू द थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंट रखने में नुकसान किसका है? वो तो स्टेट का नुकसान है. ये सब कुछ कह चुके हैं, सब बातचीत हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली इट गेट्स स्टक समवेयर in the bureaucracy or one of the departments, wherever. और जब एक चीज नहीं होती है, और इसलिए कि this needs an amendment in the rules of business, naturally I recall PMLN के ज़माने में शायद खाकान अब्बासी साहब ने इसको एग्री कर लिया था, बट इट वाज नॉट एक्टेड अपॉन. उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर उन्होंने नहीं किया. मगर this is not the correct thing. The correct is that the Attorney General office should be a totally independent office. Interesting. अब आपने ये रोल 2 दफा किया, two very different governments, two very different times in Pakistan's history. एक I think 2010 का पीरियड था, और एक I think you were 19 से लेके 20 तक, तकरीबन 10 साल बाद. Which one of these two was more challenging than the other? I think both of them are very challenging, in the sense that
That period was when there was a direct conflict between the judiciary and the executive. The first period. The first period. And that was a difficult situation. When there was a requirement of the president to write a letter, which he refused to do. This was Naturally, that created. This was the assets wala jo kya letter related tha. That is right. That is right. But then, Zahir, everything came up. Uske argument bhi hue, everything was done up. Difficult tha, but interesting. Similarly, this was also a very difficult thing. Here, we were dealing not with the government itself, the bureaucracy, a very, very difficult bureaucracy. But we were dealing with international cases also, where we had lost all the cases that we had filed in the international courts. And Reko Diq, I think, was the most. Reko Diq was probably the most prominent one. Yes. So we had about 4 of them, which we had lost earlier, that is in the previous government's time. And that was being executed, and we were trying to resist that, which we did during that period, but took a real toll on everything. That is, mentally, we were traveling like mad. I recall having traveled to New York and then coming back after 2 days, then traveling to Washington after 2 days again, then coming back, then traveling to England. And this was done in about 15 days. Wow. So that was the type of travel that we were undertaking. And then appointing lawyers, doing everything. We had managed to get stays everywhere. Unfortunately, एक आध केस के अंदर स्टे एक्सपायर हो गया था, जो कि अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है, बट वो हम उसको शायद मैनेज किसी वजह से नहीं कर पाए. But I recall that during my period, not a single penny of Pakistan was taken away, which I am proud of. Done that, but it took a lot of work in doing that. Ji. Why did Pakistan end up in a situation like it did with Reko Diq? The तकरीबन $5 billion की penalty थी. How does a country end up in that position? I can only say this in one word: very poor pleading. That is all. This was a case where we should have won, actually. But unfortunately, it was very poorly pleaded. The evidence that was brought in was awful. And now, even in appeal, we will have a difficult situation for the reason that evidence नहीं है वहाँ पर. और जब evidence नहीं होता है तो difficult situation आती है. मगर we've tried our best to, because हमने जो वहाँ पे reviews file कर दिए हैं, we have done a lot of work in that. We have brought in something which was not brought in earlier. It took us hours and hours and hours of time for drafting that appeal, which has since been filed. And I just pray that it's argued well. When contracts like these, इतने बड़े contracts अब एक government sign करती है international level पे, ये contracts को review कौन करता है to ensure कि यार इसमें कोई government के खिलाफ कोई action ना हो या कोई बहुत बड़ी penalty ना हो या नुकसान ना हो, मतलब ये किसकी responsibility है? There is nothing written down. मैंने एक opinion दी थी अभी जब Wildstyle was there. There's no process for this. The secretaries think that they are better than any other person. Unfortunately, the bureaucracy does not cater for taking advice. They think that they can manage all agreements. It is unfortunate, but then I gave an advice where it was subsequently acted upon, that future agreements, any of them, that have to be signed will go through the Office of the Attorney General, and if need be, and where expertise is required, the Attorney General can engage a counsel
so that he could go into that arena. For instance, if you are doing a petroleum contract, probably every lawyer will not be able to assist in drafting a petroleum contract, because that is a very technical contract, or for instance, contract, or for other. So you need people of expertise. So that is what I had suggested and which had been agreed. And in future, I hope it continues. That is all I can say. So there is no official process. यानी कि अगर provincial level पे contracts हों, federal level पे हों, मतलब the contract का कोई process नहीं है कि ये एक legal opinion के लिए Attorney General Office जाना चाहिए. मतलब अब हो गया. अब इसको अच्छा अब हुआ है. अब हो गया है. Whilst I was there, ये formally इसको directions दे दी गई हैं हर इदारे को कि ऐसे contracts जो हैं that will have to be referred to the office of the Attorney General. So that's a good achievement in your tenure as Attorney General. जी जी. अब मुझे एक बात बताएं, फिर आपने जो सेकंड टर्म अटॉर्नी जनरल का, खैर आपका जो सेकंड टर्म था वो भी बड़े एक इंटरेस्टिंग नोट पे एंड हुआ. ये थोड़ा सा समझा सकते हैं कि व्हाट वाज द इशू एंड व्हाई डिड द एग्जीक्यूटिव, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट्स, get entangled into something so controversial? Is that the role they should be playing rather than, or is there another role that they have? देखो, मैं basically, if you are referring to the judge's case, I don't think it would be appropriate because इस stage के ऊपर final judgment नहीं आया है. क्या होना है, क्या नहीं होना है. Role of the judiciary के ऊपर, उस stage के ऊपर, but yes, there are certain important things that I have said, and that is that the courts should not be dealing with these matters. जब Constitution में एक तरीका दे दिया है Article 209 में, so that should be the only forum that should be dealing with that issue. Otherwise, बाकी facts क्या है, that is a different aspect altogether. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जवाब दिए गए हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन का काफी दफा अभी जिक्र किया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जवाब मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल क्यों है? अब मैं इसका जवाब क्या दूं आपको? मैंने कहा शायद आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, अटॉर्नी जनरल 2 दफा, एडवोकेट जनरल. इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो ये मामला, क्योंकि यहाँ पे सारे चैलेंजेस होता, हाँ, अगर मेरे पास जवाब होता इसका तो शायद मैं ये बातें कह चुका होता ऑलरेडी. मगर ये एक जुडिशियल प्रोसेस का एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है. ये आपको याद होगा कि एक केस हुआ था बहुत पहले जिसका नाम FB अली केस था, जिसमें के एक फौजी को ट्राई किया था. कौन से साल की बात है ये 60s की, लेट 60s नहीं, ये बात होगी हाँ लेट 60s 70s की होगी, अर्ली 70s की. ब्रिगेडियर FB अली, he was tried and convicted. फिर बाद में उसका कन्विक्शन खत्म हो गया था, वो एक अलग चीज़ है. मगर एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, और उसमें क्वेश्चन, बहुत सारे इस किस्म के क्वेश्चंस आए थे जिसमें फेयर ट्रायल का भी कॉन्सेप्ट था. पहली दफ़ा फेयर ट्रायल को डील किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था ये कि जो फोरम जिसके पास इख्तियार है वो एक तो लेगा, और दूसरा उसने ये कहा था कि जितना भी मौका दे सके कि एक्यूज्ड को उतना देना चाहिए. अब आर्टिकल 209 की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें यही कहा है कि दिस इज ओनली एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी. टेक्निकली वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करके देती है, और ओपिनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, और प्रेसिडेंट टेक्स अ डिसीजन वेदर ऑन द ओपिनियन ए पर्सन शुड और शुड नॉट बी डिसमिस्ड. ये है बेसिक. अब इसको क्रिमिनल लॉ के अंदर देखें तो इसी तरह की एक FIR होती है. FIR इन्वेस्टिगेट होती है, और इन्वेस्टिगेट होने के बाद वो कोर्ट में दी जाती है.
और कोर्ट फिर डिटरमिन करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। नाउ दीज आर सिमिलर फोरम्स, फर्क हैं। जब एफआईए की बात आती है या पुलिस की बात आती है तो वो कोर्ट ये कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी स्टाइफल्ड। यही प्रिंसिपल अगर 209 में आया है कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी स्टाइफल्ड, वेयर इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार के केस में और इनके केस में दोनों में इन्वेस्टिगेशन को स्टाइफल किया है। मेरा सिर्फ इतना वो कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको होने दें, और वो इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द फाइनल रिजल्ट कहीं और आता है। तो बेसिकली दैट इज हाउ इट हैज टू बी टेकन। मगर अब जजेस ने दे दिया है, सो आई थिंक वी हैव टू गो विद इट। So you're a proponent for letting the investigation happen. Due process की एक बात है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करें जो आपका एक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जी बिल्कुल, ड्यू प्रोसेस जो है वो फेयर ट्रायल का एक एस्पेक्ट है जो एफबीएलई केस में डिसाइड हुआ था, और ड्यू प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 4 में भी बहुत वाज़े तौर पर लिखा है। तो जब ये ड्यू प्रोसेस अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस को बाईपास करने से फायदा किसका होता है? जो ड्यू प्रोसेस को बाईपास कर रहा हो उसको ही फायदा होगा, और किसी को हो सकता। अगर आपने इतना कुछ देखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपको लीगल सिस्टम पाकिस्तान के बारे में, अगर आप एक चीज चेंज कर सकें, या आप एक ऑब्वियसली नए लॉयर्स निकल रहे हैं कॉलेजेस से, उनको एक गाइडेंस दे सकें कि यार ये एक चीज चेंज करनी है अगले लेट्स से 50 साल में, नॉट इवन 50 साल, अगले डेकेड में पाकिस्तान की लीगल सिस्टम में, बेसिक मे बी इट्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, व्हाटएवर इट इज, व्हाट वुड दैट वन थिंग बी दैट कैन मेक दिस कंट्री अ बेटर, मोर स्टेबल कंट्री? देखिए, मैं दो चीज़ों पे बेसिकली दो चीज़ें, एक तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान में दिस प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज द राइट थिंग। आई वुड प्रेफर ए प्रेसिडेंशियल, समथिंग लाइक अ फ्रेंच टाइप presidential system with distributed powers. Absolute power corrupts. Absolutely. So I think that is one thing that I would want to change. Secondly, what I would want to change is that the method of appointment of judges should be modified. ये भी किया है 18th Amendment में. This is a very cruel system. जैसे पहले था, या अगर इसलिए कि बिकॉज मेरिट बेस्ड नहीं लग रहा, ये चॉइस के ऊपर है। What is the current system and what would you modify it to? I would go in for some sort of a numbered system, something whereby numbers are given to each person and he should be graded. So it could be quietly done, it could be otherwise. There should be an interview with that person with grading. I think he should be very very जैसे कि वहाँ पर होता है, अमेरिका में तो खैर पार्लियामेंट करती है उनको इंटरव्यू. Here I would not say the parliament should do it. Here I would say even this committee should do it, but independently they should be marked. Similarly, उनके जो number of cases हैं that should be taken up. कि क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स जो रेंडर हुई हैं उनके केसेस के अंदर, उनको देखना ज़रूरी है. देन रिमूवल ऑफ जजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट जज शुड बी रिमूव्ड ऑल्सो. ये भी एक होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ ये हो गया कि जज तो रिमूव हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी, चाहे वो अंडर परफॉर्म ही क्यों ना कर रहा हो. So all these things need to be modified, और अगर modify नहीं हो सकता है तो फिर we will have to stay with the system. पार्लियामेंट्री कमिटीज क्यों नहीं बन सकती? आपने जिक्र किया कि बाहर जो है पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करते हैं, यूएस के अंदर जजेस नॉमिनेट पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके. यूएस में करते हैं. Why would you not recommend that in Pakistan? वो पॉलिटिकल बहुत हो जाता है. यूएस के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो होते हैं. वहाँ पर चूंकि एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, तो इसलिए वो जजेस कुछ इंडिपेंडेंट माइंड के साथ चले भी जाते हैं. हमारे यहाँ वो अभी इतना मेच्योर
systems नहीं हैं, तो that is why I would not want कि parliamentary form हो. दूसरा, judges ने ये judgment दे दिया है कि एक शख्स जो कि पार्लियामेंट में बैठेगा, he does not have to be a graduate. He can be a person who has not even passed his second grade. So he can become a... Now, would you want a parliamentarian then to go and influence that decision? Two judges? No, I don't think that would be appropriate. Fair point. Fair point. I'll ask my last question as we're running out of time. If you were given the Attorney General position for the third time, and whoever the next government is, would you take that job? Depends on who the government, what the government is. Depends on whether I can get a absolutely free hand. Like I said, that the office of the Attorney General has to be free from any other. Probably if that is so, maybe I could. Thank you, Anwar Mansoor Khan Sahab. Thank you for the time. Very enlightening having you here today and learning a lot about your history. And I'm sure that a lot of the nuggets that you shared are going to be picked up on by those watching, and they've taken some valuable lessons from your life. Thank you all for tuning in. And inshallah, you're welcome. You're welcome. Inshallah, फिर दोबारा मुलाकात होती है. Thank you, जी. Allah Hafiz. Hafiz.